बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अमरीकी सरहद के पार से इंसानी स्मगलिंग को रोका जा सके। ख्याल रहे कि 4 अफराद मुंजमद होकर हलाक हो गए। अमरीकी सदर ने यूएस कॉन्फ्रेंस ऑफ मेयर्स से खिताब किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूएस कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेयर्स से 9वें सालाना सुरमाई इजलास के दौरान मुल्क के मेयर्स से खिताब किया। And so you think I'm kidding. It's not a joke. Mayors carry the quality of the people's lives on your shoulders. Everything you do every day affects their lives more than almost anything anybody else does. And you can make or break a person's day. Will the bus get me home on time? It sounds silly, but will the garbage be picked up? Will I be safe walking in the park? These are the bigger questions. Can I afford to give my family a good life? Will my kids have a chance? अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में साइंस और टेक्नोलॉजी के मशीरों की अपनी कौंसिल से मुलाकात की। This time, I would talk about PCAST, and people would look at me like, "What in the hell is he talking about?" And then I'd explain what I meant. And it wasn't particularly active the last 4 years, but science is back. Back in vogue. And I want to welcome everyone here today with me and the President's Council on Advisors on Science and Technology, so-called PCAST. But first and foremost, I want to thank the co-chairs, Dr. Lander, Dr. Arnold, and Dr. Zuber, and the entire council, all of you, for your willingness to serve. It's no secret that I'm a big fan of this council. I would say parenthetically, I used to, when we were in the Obama administration, we'd have our meetings at PCAST and व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी ने प्रेस ब्रीफिंग दी। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी पर सहाफियों के सवालात के जवाब दिए। Today's announcement is just the latest progress in our efforts to ramp up domestic manufacturing, tackle near-term bottlenecks, especially with critical goods like semiconductors. Earlier this year, Samsung, Texas Instruments, and Micron announced $80 billion in investments in semiconductor manufacturing. Congress can accelerate this progress by passing the U.S. Investment and Competition Act, also known as USICA, which the President has long championed and which he called for action on today. This bipartisan legislation puts historic funding behind unclogging our supply chains, research and development, innovation, and advanced manufacturing in every corner of America, and invest $52 billion in making more chips, something that's vital to address our supply chains and lower inflation. Tomorrow also marks the 49th anniversary of the Supreme Court's व्हाइट हाउस की कोविड-19 रिस्पांस टीम ने वबाई मर्ज से निपटने के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी। ख्याल रहे कि अमेरिका में कोविड-19 की वजह से अमवात 8,70,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। With their vaccination, meaning those who are boosted when they are eligible. There are still millions of people who are eligible for a booster dose and have not yet received one. As we continue to face the Omicron variant, representing over 99% of infections in the United States today, I urge all who are eligible to get their booster shot to get it as soon as possible. Thank you. I'll now turn things over to Dr. Fauci. Thank you very much, Dr. Walensky. What I'd like to do over the next several minutes is to answer a question that's shown on the... अमरीकी सदर जो बाइडन ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में चीन, शुमाली कोरिया के मिसाइलों और यूक्रेन में रूस के अहदाफ समेत मुआशी और सलामती के मसाइल पर ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। इसी के साथ ही अब तक की खबरों का सिलसिला खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।